2B और 3 की स्टेज में चली गई है, शुरू हो गई है, और जिसमें 1700 मरीजों को स्टडी किया जाएगा। और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज़ 1 की स्टडी में 375 मरीज को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज़ शुरू करेगी। और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज़ 1 की कंप्लीट हुई है उनकी, कोई 45 या 50 मरीज की, और सेकेंड फेज़ उनकी शुरू होने वाली है। तो ये पोजीशन है। और शुरू होने वाले इसमें फेजेस में आप लोग को ये समझना जरूरी है कि पहले 1 डोज वैक्सीन की मिलती है, क्योंकि ये हमेशा 2 डोज वैक्सीन है। तो पहले 1 डोज मिलेगी, उसके 14 दिन या 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलेगी, और उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस, या 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस देखी जाती है ब्लड में कि एंटीबॉडीज पैदा हुए या नहीं पैदा हुए। 10. Yes, madam. Sir, Please, I think you have already asked 2 questions. Just let the next one ask the question. So you have been mentioning that India has now increased its recoveries, and we are seeing a lot more recovered patients. But so there have been some complaints from the recovered patients themselves who have been admitted back into the hospitals with respiratory problems such as lung fibrosis. So we were hearing that some kind of post-COVID care facilities will be started. So could you give us more information on that, and how is the government looking at hand-holding hospitals across the country in states to do that? There is a technical committee in the Ministry of Health which is headed by Director General Health Services. It's called the JMG. It consists of domain knowledge experts from different central government hospitals, from AIIMS New Delhi, from WHO India office, and even domain knowledge experts from outside the government. So that body, as I have shared with you earlier, is working on a document, a guidance document for people who recover from COVID and the possible complications that may arise and how to address those complications. To finalize that document, this technical body, the JMG, is obtaining data of the recovered patients from central government hospitals and AIIMS across the country, and those patients specifically who have come back with certain complications and have then been treated. 99. So my question is, my first question is to both Mr. Bhargava and Mr. Bhushan, and that is regarding the breakup of RT-PCR and antigen tests. So why are we not being made available that breakup? Also the accuracies. If at all antigen has less accuracy, then I mean, what would the implications on the testing numbers look like? When we look at more recoveries, do we also look at it from the testing angle? That is the question. Yeah. And I think just let the first question be answered, I think, one by one. Yeah. And just what is the relevance of sero surveys? I mean, if they are not giving you the T-cell response, etc., then what is the relevance of conducting it at all, and probably what kind of costs go into it? Yeah, in terms of your percentage of tests and the rapid antigen tests, we have to clearly tell you that the RT-PCR tests are still growing at a rapid rate. We are setting up new labs to test RT-PCR more. Some states have found the antigen test slightly simpler and therefore have reduced the RT-PCR test by 1 to 2 or 2 to 3%, and they do not show the national rise which is being shown across the country in terms of RT-PCR tests. The antigen tests have grown and would represent anywhere across, because they vary from state to state. So if you look at the national average, there would be around 30 to 40% in terms of antigen tests, but many of them, if they are symptomatic, have to be followed by an RT-PCR test. So that adds to the number of RT-PCR tests. In terms of sensitivity, that has been discussed several times. The specificity is nearly 100% for both the tests, but sensitivity for the rapid antigen tests varies from is of moderate nature and could be anywhere between 60 to 85%. However, the RT-PCR cell sensitivity could be anywhere from 80 to 95%, depending on the situation.
and how the sample has been collected and at what time of the illness the sample has been collected. Your question regarding serosurvey is an important one, because serosurveys are important to guide us in terms of where we are at the what phase of the epidemic are we in this particular area, and what we need to do in terms of our public health response, in terms of our containment zones, enhancing them, increasing them, making micro-containment zones, further isolating those people who are showing high prevalence. So that is the purpose of the serosurvey, to guide the policymakers how to, and that has happened right from the first serosurvey to the various state serosurveys, and that is why we have this example of how successful we have been in various mega cities. 33. सीरो प्रेवलेंस पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसको हिंदी में भी समझाना जरूरी है कि सिग्निफिकेंस क्या है। हम सीरो प्रेवलेंस सर्वे क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम जानें कि इन्फेक्शन का स्प्रेड क्या है। एकेडमिक एक्सरसाइज तो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इन्फेक्शन का स्प्रेड क्या है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। दिल्ली में पहला राउंड सीरो प्रेवलेंस का हुआ एनसीडीसी के नेतृत्व में, और इसमें मिड जून का जो इन्फेक्शन था उसको कैप्चर करने का प्रयास किया गया। दूसरा राउंड दिल्ली सरकार ने किया और उसमें मिड जुलाई के इन्फेक्शन को कैप्चर करने का प्रयास किया गया। आप दिल्ली इस समय 11 प्रशासकीय जिलों में विभक्त है। दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 11 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल्दो वी टेक दिल्ली एज वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। I will give you example of two districts and how it feeds into policy making. In southeast Delhi, in the first round of sero prevalence, the prevalence was 22.12%. 22% इन्फेक्शन का स्प्रेड पाया गया पहले राउंड में। दूसरे राउंड में साउथ ईस्ट दिल्ली का जो जिला है उसमें 33% प्रेवलेंस पाया गया। तो किसी जिले में जहां 22% प्रेवलेंस है और किसी जिले में अगर किसी अन्य तारीख में 33% है, तो उसका प्रभाव उस जिले में किस प्रकार की कंटेनमेंट की कार्रवाई की जानी है, किस प्रकार की सर्वेलेंस की कार्रवाई की जानी है, उस पर पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है सीरो प्रेवलेंस का। एक दूसरा उदाहरण साउथ वेस्ट दिल्ली का मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले राउंड में साउथ वेस्ट दिल्ली में सीरो प्रेवलेंस वॉज 12.95%, विच इज रफली 13% प्रेवलेंस पाया गया साउथ वेस्ट दिल्ली में पहले राउंड के सीरो सर्वेलेंस में। दूसरे राउंड में केवल 16% पाया गया। इसका अर्थ ये है कि साउथ वेस्ट दिल्ली की जो बड़ी आबादी है वो अभी भी ससेप्टेबल है इन्फेक्शन से। इसलिए जरूरी है कि लोग मास्क पहने, इसलिए जरूरी है कि लोग 2 गज की दूरी बनाकर रखें, इसीलिए जरूरी है कि लोग हैंड हाइजीन का पालन करें।